is our question number first. So it's given if uncertainty in position and momentum are equal. So if uncertainty in position and momentum are equal, then we have to determine uncertainty in velocity. So this question has been taken from Heisenberg uncertainty principle. According to Heisenberg uncertainty principle, uncertainty in position multiplied by uncertainty in momentum, it's equal to h over 4 pi. Isn't it? Now, according to question, this uncertainty in position, it's equal to uncertainty in momentum. So I'll write in place of del x, I'll write del p. So I'll write over here del p into del p is equal to h over 4 pi. Isn't it? Now we know that del p is equal to m del v. So m del v multiplied by m del v, it's equal to h over 4 pi. And further solving it, m into m is m square. So I can write m square into del v square is equal to h over 4 pi. Isn't it? So this is my h over 4 pi. Now taking this m square over here, what we are going to get? We get del v square is equal to h over 4 pi m square. Isn't it? Now del v will be equal to root of this root of h over 4 pi m square. Now, on further solving it, we can write it like this. This is equal to root of h over 2 square m square pi. Now, square root of 2 and m will go. We'll get 1 by 2 pi, 1 by 2 m, 1 by 2 m root of h over pi. So, this will be our uncertainty in velocity. So, the correct option for this question is option number B, that's 1 by 2 pi root of h over pi. 1 by 2m root of h over pi. Now let's move to the next question. So next question is the first line, the first emission line in the hydrogen atom in the Balmer series will be. Now let us quickly draw the spectrum. We know that the spectrum is like this. This is my n is equal to 1. This is n is equal to 2. This is basically your energy level n is equal to 3. And this is energy level n is equal to 4. Likewise, we have energy level 5, 6, 7, and 8. So whenever an electron jumps from higher energy level to the second level, whenever an electron jumps from any higher energy level to the second level, if an electron jumps from higher level to the second level, the series of lines is known as Balmer series. Electron jumps from higher level to any second level, then it's known as Balmer series of line. This is again a Balmer series of the line. Now, in the Balmer series of the line, this n is equal to 2. This will be your first line. That's n1 is equal to 2. What will be n2 in this case? N2 will be the first. What will be first line in this case? First line is this line. This line is the first line in the Balmer series. So for the first line, n2 will be equal to 3. Now we can use Rydberg formula to determine the first emission line. है ना? So Rydberg formula क्या है जिससे हम wave number निकालते हैं. So wave number is equal to 1 divided by lambda. It is equal to RZ square, where R is Rydberg constant and Z is atomic number. In the present case, we are discussing hydrogen atom. So Z is equal to 1 into 1 divided by N1 square minus 1 divided by N2 square. So let us further solve it. So R over here is Rydberg constant, Z is 1. So there's no sense of writing it. 1 divided by N1 square, N1 over here is 2. So 1 divided by 2 square, that's 4. Minus 1 divided by N2 square, N2 in this case is 3. So it will be 1 divided by 3 square, that's 9. So let's further solve it. This will be R into 9 ones are 9 minus 4 ones are 4 divided by 9 fours are 36, isn't it? So 9 minus 4 is 5. This will be 5R divided by 36 and this will be your wave number. So the correct option for this question is 5R by 36. Our answer will be option number E, 5R by 36. Now let us move to the next question. So this is our next question. The orbital angular momentum of an electron for 2s orbital. We have to determine orbital angular momentum of an electron for 2s orbital. So orbital angular momentum of an electron, L, it is given by root of L into L plus 1 h cross or h over 2 pi. So this is the general formula. Now we know that for s subshell, value of L is equal to 0. Therefore, orbital angular momentum will come out to be root of 0 into 0 plus 1 h over 2 pi. This is in multiplication.
So 0 multiplied by anything is equal to 0. So orbital angular momentum for 2s orbital, it will be equal to the 0. So option number B will be the correct option. Now let's move to the next question quickly. The maximum number of electrons that can be associated with quantum numbers n is equal to 3, L is equal to 1, and m is equal to -1. So over here we are given a certain set of quantum numbers and we have to determine the maximum number of electrons that are associated with this set of quantum numbers. So let us say n is equal to 3, isn't it? L is equal to 1. So L is equal, we know that for S, P, D, F, value of L is 0, 1, 2, and 3. That means this is a p subshell, isn't it? Now n is equal to 3 means it's a 3p subshell. Or here we can say that it's a 3p subshell. Now we have in 3p subshell, we have 3 orbitals. There are 3p orbitals and these are like this 3p orbitals. Now this is my px orbital, this is py orbital, and this is pz orbital. For pz orbital, value of m is taken to be 0, and for px and py orbital, value can be +1 or -1. So over here, let us say this is +1, let us say this is -1. That means this orbital may be either your 3px orbital or it may be your 3py orbital for which m is equal to -1. Because m is equal to -1 may be for px orbital or for py orbital. Similarly, m is equal to +1 may be for px orbital or for py orbital. So out of these three orbitals, either your 3px or your 3py contains m is equal to -1. Since 3px orbital is the only one orbital, and orbital can accommodate a maximum of 2 electrons, therefore there can be only 2 electrons in this orbital, which has a set of quantum numbers 3, 1, and -1. So the correct option will be 3. That is 2. Next question पे जाते हैं. The correct set of quantum numbers for z is equal to 37 is. So over here we are given z is equal to 37. Now z is equal to 37 means it belongs to the group first element. If you do not know z is equal to 37 belong to which group of the periodic table, so you can take help of magic numbers. So मैजिक नंबर्स क्या है? ये मेरे पास लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेसिकली 1 है, लिथियम का 3 है. उसके बाद यहाँ पे मैजिक नंबर मैंने +2 ऐड किया, उसके बाद +8 ऐड किया, उसके बाद +8 ऐड किया, उसके बाद +18 ऐड किया, उसके बाद +18 ऐड किया. दीज आर मैजिक नंबर्स फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना. तो देखो अगर मैं इसको फर्दर ऐड करूंगा ना 8, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 11. एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 19. इसका एटॉमिक नंबर आएगा 37. अब यू डू नॉट नो टू विच ग्रुप 37 बिलोंग, तो आप क्या करोगे? मैजिक नंबर को इनवर्स करोगे, इसका रिवर्स लगाओगे. तो आपको पता है 37 में 18 माइनस करो, यू विल गेट 19. 19 में आप कितना माइनस करोगे? 8, यू विल गेट 11. 11 में माइनस करोगे 8, यू विल गेट 3. 3 में माइनस करोगे 2, यू विल गेट 1. 1 मींस कि इट बिलोंग्स टू द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट. सो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ns1. अब देखो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड. देयरफॉर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1. मतलब we have to determine quantum numbers for the configuration 5s1. z is equal to 37 का सेंस यहाँ पे क्या है कि it is 5s1. सो हमें किस पर डिटरमाइन करना है? z is equal to 37. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5s1. सो अगर 5s1 है तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, और n का वैल्यू, s का वैल्यू क्या होगा. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, n is 5. और s सबशेल l is equal to 0. एंड अगर l 0 है, if l is equal to 0, तो m के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं? 2l plus 1. That means 2 into 0 plus 1. 2 into 0 plus 1 is 1 value, and that 1 value starts from the 0. तो m भी 0 होगा, और s क्या होगा? या प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, प्लस माइनस हाफ. अब देखो 5 0 0 plus minus half. So this is the correct option. Now let us move to the next question. How many orbitals, the quantum numbers n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to +2 are possible? हमें बताना है कि हमारे पास ये वाले क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं. n is equal to 3, कौन कौन सा क्वांटम नंबर? n is equal to 3. और हमारे पास कौन सा क्वांटम नंबर दिया गया है?
L इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक और क्वांटम नंबर है M इज इक्वल टू +2, तो हमें बताना है कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। सो अगर N इज इक्वल टू 3, बेसिकली ये 3 है ना, हमें पता है SPDF के लिए L का वैल्यू जो होता है दैट इज 0 1 2 3, मतलब D के लिए वैल्यू ऑफ L इज 2, सो इट इज 3D। अब अगर L का वैल्यू 2 है तो M के कितने वैल्यूज होंगे, 2L प्लस 1, दैट मीन्स 2 into 2 plus 1, दैट मीन्स 5 वैल्यूज आर पॉसिबल। एंड ये जो 5 वैल्यूज हैं ये कौन से वैल्यूज होंगे, आपका 0 +1 -1 +2 -2, ये वैल्यूज पॉसिबल होंगे ना। ये 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। 5 d ऑर्बिटल्स के लिए ये वैल्यूज पॉसिबल है। इनमें से एक d ऑर्बिटल ऐसा है जिसके लिए m का वैल्यू क्या है, +2। सो एक ऑर्बिटल d का ऐसा है जिसके लिए m का वैल्यू कितना है, +2। तो मतलब हमें बताना है कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वन ऑर्बिटल इज पॉसिबल, वन ऑर्बिटल इज पॉसिबल। एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है जिसके लिए m का वैल्यू +2 है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है जिसके लिए m का वैल्यू +2 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर E। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many orbitals? Now move to the next question. In an atom, how many electrons the quantum numbers? अब बताना है how many, कितने electrons के लिए ये वाले quantum numbers possible हैं। तो again वही बात है, n is equal to 3, मतलब L is equal to 2, L is equal to मतलब D, मतलब ये 3D सबशेल है। अब M is equal to +2, अब देखो हमारे पास D ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 D ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। 5 D ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके लिए +2 का वैल्यू, इसके लिए +1 का वैल्यू, M का वैल्यू मैं बेसिकली बताता हूँ यहाँ पे -1 -2। अब हमें बताना है कितने ऑर्बिटल के लिए +2 पॉसिबल है, एक ऑर्बिटल के लिए। और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हमें बताना है फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब m का वैल्यू +2, अब देखो ये ऑर्बिटल जो है ना, ये ऑर्बिटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए m का वैल्यू +2 हो सकता है। बट साथ क्या दिया गया है, साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि s का वैल्यू +12। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एरो डाउन है तो s इज इक्वल टू -12, और अगर एरो अप है तो s इज इक्वल टू +12। तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ऐसा है जिसके लिए s इज इक्वल टू +12। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, isn't it? Now moving to the next question. An electron is one of the 4d orbital. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है which is present in 4d orbital. Which quantum number is not valid for 4d orbital? तो मतलब हमारे पास 4d orbital है, तो हम कहेंगे 4d orbital है तो n is equal to 4। अब d के लिए l का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू d के लिए 2 होता है। If the value of L comes out to be 2, we can determine values of M, that is 2L plus 1, isn't it? So 2 into 2 plus 1, basically that will be equal to 5. अब ये 5 values कौन से होंगे, 0, +1, -1, +2, -2. These are the values which are possible, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हमें बताना है कौन सा ऑर्बिटल वैलिड नहीं है। तो अगर हमारा 4d ऑर्बिटल है, n is equal to 4 करेक्ट है, m is equal to 1 हो सकता है, m is equal to 2 हो सकता है, बट L is equal to 1 नहीं हो सकता है, तो ये 4p ऑर्बिटल बनेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? Thank you everyone. If you really like these videos, please do share with your loved ones. Thank you.